Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 7. This is your English grammar book and here the name of your book is English Grammar plus Skills Unleashed Work. So children, today we are going to do chapter number 5 of your book and the name of the chapter is tenses. So this chapter is about different types of tenses. Yes, we are going to learn about different tenses in this chapter as we have already done in our smaller classes. So what is a tense? The tense of a verb refers to the time at which the action shown by it takes place. So tense क्या होता है? वो verb के बारे में बताता है कि जो verb है, जो action है, वो किस टाइम पे हो रहा है. टाइम के बारे में बताता है कि काम करने का क्या प्रॉपर टाइम है. The tenses thus refer to present, past और future time. So tense जो है हमें present के बारे में बताते हैं, past के बारे में बताते हैं और future के बारे में बताते हैं. You have already learned the basic of tenses in your previous classes. There are mainly 3 tenses. So 3 तरीके के tense होते हैं, the present, the past and the future tense. Each of these 3 tenses has 4 forms. So हर tense के 4 forms होते हैं. क्या क्या होते हैं? Simple, progressive means continuous, perfect and perfect continuous. Now we shall learn more about the simple and progressive, that means the continuous form of all the 3 basic tenses. So जो भी तीनों tenses हैं उनके हम ये दोनों parts यहाँ पे पढ़ेंगे. So first is simple present, that is present indefinite also. So simple present tense is also known as present indefinite, and this form is used in this. What all things we can keep in mind? If the subject is I, अगर जो है subject जो है I है, we है, you or the third person plural, then the subject plus base form, that is the first form and the object. So यहाँ पे जो rule हमें follow करना होता है वो होता है the subject, then the base form and then the object. So here the examples are given. I read English novels. So यहाँ पे I के साथ हमने क्या लगाया है? Read लगाया है. Similarly, you read English poetry. जिसके साथ हमने read लगाया है. We read English comics and my friends read detective story. So यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब भी हम I, we, you या फिर कोई third person plural use करते हैं तो उसके साथ हम verb की first form लगाते हैं and with subject and object. So these are the things that we have to keep in mind here. Now, if the subject is third person singular, अगर जो subject है हमारा singular है, then the subject, then the base form, that is V1 form, and then S or ES is to be inserted and then the object. So अगर जो हमारा subject जो singular है तो हमें जो उसमें पहले subject लिखना है, फिर उसका जो verb पहले first form है वो लिखना है. अब उस verb की first form में we have to add S या फिर ES. S लगाना है या फिर ES लगाना है, and then we have to add the object. For example, Lucy is here, a single girl, एक girl की बात हो रही है. So Lucy reads the Bible. अब हमने read में हमने S लगा दिया है. So reads the Bible. Second one is Akbar brushes his teeth in the morning. So यहाँ पे अकबर क्या है? Singular. सब्जेक्ट की बात हो रही है, अकबर सिंगुलर, ऐसे हमने यहाँ पे ब्रश में es लगा के से ब्रशेस कर दिया. सो दिस इज द रूल वी हैव टू फॉलो. जब सिंगुलर नाउन होगा तो वी हैव टू यूज s और es, और जब प्लूरल नाउन होगा तो s और es उसमें नहीं लगाना. द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. अब सिंपल प्रेजेंट के यूज क्या क्या है, लेट्स सी. The simple present tense is otherwise called the present indefinite tense. It is used to tell the following thing. Simple present tense को हम present indefinite tense भी कहते हैं.
और ये किस काम आते हैं, ये कुछ चीजों को फॉलो करने के काम आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ यूनिवर्सल ट्रुथ. अब किसमें लगाते हैं, कोई ऐसी बात जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे कि सूरज तो ईस्ट से ही निकलेगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे कोई चीज नहीं कर सकता, कभी वो वेस्ट की पोजीशन में नहीं आएगा. सो ऐसी चीजें जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट को यूज करते हैं. द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब सन वन है तो एस लगाया है. डेथ कम्स टू एवरीवन सूनर और लेटर, सबकी डेथ होती है, सो दिस इज आल्सो यूनिवर्सल ट्रुथ. अब डेथ के साथ एस लगाया है. वाटर टर्न्स इनटू आइस ऑन 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर को अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए तो आइस बन जाता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है. एंड द काउ ईट्स ग्रास, काउ ग्रास खाते, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज हैबिचुअल एक्शन और रिकरेंट. सो एक कोई हैबिट के बारे में जब बात होती है या कोई ऐसी चीज जो बार बार हम करते हैं, सो ऐसी चीज को में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई ड्रिंक टी बट माई फ्रेंड प्रिफर्स कॉफी. सो अब यहाँ पे मैं चाय पीता हूँ बट मेरा जो फ्रेंड है वो कॉफी पीता है. सो अब यहाँ पे क्या है कि एक हैबिट की बात है, मेरी जो हैबिट है वो चाय पीने की, बट मेरे फ्रेंड की हैबिट है कॉफी पीने की. सो यहाँ पे आई के साथ हमने ड्रिंक लगाया, एस नहीं लगाया है, और फ्रेंड के साथ एस लगाया है. नेक्स्ट, माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8:30 AM एंड एंड्स एट 2:30 PM. मेरा स्कूल 8:30 AM पे शुरू होता है और 2:30 पे खत्म होता है. सो हियर दिस इज आल्सो अ रिकरिंग इवेंट, ये रोज होता है, डेली होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है. सो स्कूल के साथ हमने स्टार्ट्स लगाया है एंड यहाँ पे लास्ट में हमने एस लगाया है, एंड में हमने एस लगाया है. ये एक रिकरिंग इवेंट. नेक्स्ट चल्ड्रन, द सी पॉइंट सेज a situation of fact that is permanent. ऐसी situation of fact जो permanent है. For example, this road runs from Delhi to Jaipur. So एक fact है कि ये जो road है ये दिल्ली to जयपुर ही जाती है, direction change नहीं करती. So this is a fact. This is a permanent situation. My house faces the Yamuna. So मेरा जो घर है वो यमुना की तरफ face करता है. So here it also this is a permanent fact. So this cannot be changed. Next is something that happens all of a sudden while we are talking. So कोई ऐसी चीज जो एकदम से हो जाती है और जिसके बारे में बात करते हैं. For example, the girl falls cold. So अब यहाँ पे बात हो रही है कि अचानक से बात करते करते एक गर्ल जो है गिरने लगी. So हमने क्या कहा, the girl falls, गर्ल गिर रही है, hold her से पकड़ लो. It rains, get inside, बारिश हो रही है, अंदर आ जाओ. The bus comes, move fast, and he beckons, let's go. So here we can see with the girl we have added s. girl के साथ एक है इसलिए s लगाया है. अब it के साथ s लगाया है, bus के साथ भी s लगाया है, और he के साथ भी हमने s लगाया है. Next is when our demonstrative here or there is used to point out something happening. So जब demonstrative words use होते हैं जैसे कि here and there, ऐसे words use होते हैं तो भी हम जो है simple present को use करते हैं. So here comes Mohan, there goes your friend. So here के साथ हमने comes लगाया है and there के साथ हमने goes लगाया है. Next is to express verbs or perceptions such as see, hear, smell, feel, taste, etc. So these perceptions, or if there are there in our sentence, then also we use simple present tense. So I hear a strange sound. The football smells. The food smells good. The coffee tastes bitter. She looks smart. So these are a few of the points that we should keep in our mind. इन points को हमें अपने ध्यान में रखना है, and we have to read them again so that we can easily understand these points. Now the last point, children, here is an action in a coming future. So ऐसे action के बारे में बताना है जो future में आने वाला है. For example, the school opens on 5th July. So 5 जुलाई को स्कूल खुलने वाला है.
My exams commence next week. मेरा एग्जाम नेक्स्ट वीक होने वाला है. And we leave to Dubai for next week. हम दुबई जाने वाले हैं. And she returns tomorrow. वो कल आने. So here also we can children see कि स्कूल के साथ हमने S लगाया है, एग्जाम्स के साथ S नहीं लगा है, B के साथ नहीं लगा है और she के साथ S लगा है. So जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो उसके साथ हमें जो है एस या फिर ईएस लगाना, और जब वो प्लूरल है एस या ईएस नहीं लगाना. सो यही सेम चीज हमें यहाँ पे की हुई मिली है. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स इन द ब्रैकेट. सो हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को इसमें फिल करना है. ये ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको यूज करना है टू फिल इन द ब्लैंक्स. So first one children here is the plane. अब यहाँ पे plane की बात हो रही है. So plane क्या है? Dash at 6:30. Plane जो है 6:30 पे arrive word को fill करना है. तो arrive का बन जाएगा arrives. S लगाएंगे हम इसमें. क्यों? क्योंकि plane is here singular. Next is I will phone you when he dash back. मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब वो वापस What will come here? Come. जब वो वापस यहाँ पे आ जाएगा. So here come को हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे he है, he is singular. So हम यहाँ पे लिखेंगे comes. S लगा देंगे. So children, like we have done the 2 rest questions you have to do on your own and see whether you are able to do or not. So the rest questions are your homework. Next, the second one is हमने अभी पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में. अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में. सो इफ द सब्जेक्ट इज आई, अगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ एम लगाएंगे एंड वी मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें आईएनजी को ऐड करेंगे एंड देन वी विल ऐड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई के साथ हमने क्या लगाया, आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ एम लगाएंगे. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट थी, अब उसमें आईएनजी लगा दिया तो बन गया राइटिंग अ लेटर. सो आई एम राइटिंग अ लेटर. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. अनदर एग्जाम्पल इज आई एम वॉचिंग अ मूवी. Now, the second point is if the subject is singular, then अगर subject singular है तो क्या करना है? We have to add is plus subject plus is plus verb की first form, then ing plus object. So Sonali is helping her mother. So Sonali यहाँ पे singular हमारा subject है तो उसके साथ हमने is लगाया है and then verb की first form help लगाई है, उसमें हमने ing को add करके इसमें हमने ऑब्जेक्ट को ऐड किया और वो ऑब्जेक्ट कौन है, हर मदर. नेक्स्ट द नेक्स्ट एग्जांपल इज शी इज स्लीपिंग साउंडली. नाउ सी पॉइंट सेज द सब्जेक्ट इज यू और प्लूरल. अगर सब्जेक्ट यू है या फिर प्लूरल है, सब्जेक्ट के साथ हमें आर लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी लगानी है और उसके साथ फिर हमें ऑब्जेक्ट ऐड करना है. फॉर एग्जांपल दे का मतलब है प्लूरल, so दे के साथ हमने लगाया आर and then having lunch. They are having lunch. So have का बन गया having और lunch को हमने इसमें ऐड कर दिया. You are working hard. तुम जो है hard work कर रहे हो. So here these 3 points we have learned कि जब subject I है तो M लगाना है, subject singular है तो is लगाना है और अगर subject जो हमारा plural है या फिर you है तो हमें R लगाना है और इन सब में हमें verb के साथ ing को ऐड कर देंगे. Now the use of present progressive tense. क्या यूज है present progressive tense का? The present continuous tense is otherwise called the present progressive tense. Present continuous tense को हम present progressive tense भी कहेंगे. It is used to tell the following thing. So ये use किया जाता है कुछ चीजों को. For example, an action going on at present. So ऐसा action जो present में हो रहा है. For example, we are constructing a new house. हम एक नया घर construct कर रहे हैं. She is waiting outside. My uncle is touring America, and Tom is preparing tea for him. So in this all we can see the action is going.
एक्शन अभी चल रहा है. We are constructing a new house. हम एक घर बना रहे हैं, वो काम चल रहा है. She is waiting outside. वो बाहर वेट कर रही है. तो यहाँ पे भी वो वेट करने का काम कर रही है. My uncle is touring America. मेरे अंकल अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पर टूर कर रहे हैं. तो ये भी काम अभी चल रहा है. So in all these sentences जो वर्क है वो अभी भी चल रहा है. Next is an action in the near future. So ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में होने वाला है, अभी हो नहीं रहा है बट होने वाला है. So इसमें भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर लीविंग टू दिल्ली टुमारो. कल जा रहे हैं. आई एम विजिटिंग दैट प्लेस इन अ फ्यू डेज. कुछ दिनों में जा रहे हैं. देयर मदर इज ज्वाइनिंग द बैंक नेक्स्ट वीक. उनकी मदर जो है बैंक जा रही है नेक्स्ट वीक. सो अगले हफ्ते की बात है ये. एंड ही इज रिटर्निंग सून. वो जल्दी ही आने वाला है. सो ये भी काम होने वाला है. सो कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में होने वाला है उसका भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. Now fill in the blanks with appropriate continuous form of the verb given in the bracket. Hurry up, we dash for you. So in this we have to fill present continuous tense. So we के साथ क्या लगाएंगे? Waiting तो नहीं लगेगा. Are waiting or wait. So here are waiting is the answer, children. Now what are you dash? I am dash. Letter. So what are you doing? And I am writing letters. So here first one is the correct answer. What are you doing? And I am writing letters. Children, the race questions are homework. You have to do all these on your own. Now comes the negative and questions in simple present and present continuous tense. So negative sentences या फिर questions के बारे में हम पढ़ेंगे अब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसे कैसे बनाना है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसे कैसे बनाना है. सो फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव्स. तो सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? टू मेक नेगेटिव्स इन अ सिंपल प्रेजेंट वी यूज डू नॉट और डज नॉट. सो हमें डू नॉट या फिर डज नॉट को यूज करना है बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड. तो बेस फॉर्म के पहले हमें यूज करना है. विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स does not is used. So third person जो singular subject होता है उसके साथ हम does not use करते हैं. With other kinds of subjects do not is used. तो singular के साथ हमें does लगाना है और जो plural है उनके साथ हमें do not लगाना है. So this we have learned here. Now look at some of the examples. I do need eat. I do not eat junk food. मैं junk food नहीं खाती. They do not own a house. उन्होंने घर को नहीं, वो घर उनका नहीं है. She does not sleep late. वो लेट से नहीं सोती है. मधु does not speak English fluently. मधु ठीक से इंग्लिश fluently नहीं बोलती. So here we have inserted जो हमारा जो main verb है उसके पहले हमने do not लगाया. अब I के साथ हम do not लगाएंगे. They के साथ भी do not लगाएंगे. बट शी यहाँ पे सिंगुलर है तो उसके साथ हमें डज लगाना है और मधु के साथ भी हमने डज लगाया. सो डज नॉट इज हियर और उसके बाद हमने यूज किया अपना हमारा मेन वर्ब. नाउ सिंपल प्रेजेंट क्वेश्चंस. अब सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? टू फॉर्म क्वेश्चंस इन द सिंपल प्रेजेंट वी यूज डू और डज बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से पहले हमें डू या फिर डज लगाना है. डज Does is used before third person. Does जो है third person से पहले यूज किया जाता है singular subject and before other kind of subject do is used. So जैसा भी हमने पीछे पढ़ा था negative sentences के साथ वैसा ही हमें यहाँ पे भी करना है. बट हमें क्या करना है? do या does को सबसे स्टार्टिंग में यूज करना है. The base form of the verb is used. Here the base form is used. Now the examples are given here. He works hard. इसका हमें क्वेश्चन बनाना है. And the boys sleep late. इसका भी क्वेश्चन बनाना है. तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो हम इसके साथ does लगाएंगे. So does he work hard? तो works में से s हट जाएगा. So does he work hard? And the second one will be did the boys sleep late? So these are the two questions that we have made here. Next is present progressive negatives. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा? टू फॉर्म नेगेटिव्स इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नॉट इज यूज्ड
आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स है इनके बाद हम नॉट लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग बन जाएगा, अब एम और राइटिंग के बीच में हमें नॉट लगाना है, तो क्या बन जाएगा, आई एम नॉट राइटिंग. इट इज रेनिंग हो जाएगा, इट इज नॉट रेनिंग. नेक्स्ट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस. सो क्या होते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस? टू फॉर्म क्वेश्चंस इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव द ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट. सो जो ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसे हम सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. अब यहाँ पे एम को हम लगा देंगे सबसे पहले, सबसे आगे, सब्जेक्ट से भी पहले. सो एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग? इज शी driving a car? So these are the two examples, children. I hope that you understood it. Next, confusion over present continuous and present perfect continuous. So present continuous और present perfect continuous को जब हम करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत confusion होता है. क्या confusion होता है उसको पढ़ेंगे, और उसको कैसे दूर करना ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. So if we want to express the beginning time of the action, तो अगर हमें जो है बिगनिंग टाइम, किसी भी एक्शन की बिगनिंग टाइम को एक्सप्रेस करना है, वी कैन नॉट यूज इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वी शुड यूज इट इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वहाँ पे नहीं यूज करना, हमें क्या यूज करना, हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना. कन्वर्सली, इफ नो सेंस ऑफ द बिगनिंग टाइम ऑफ द एक्शन इज एक्सप्रेस, इट इज इनकरेक्ट टू यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो अगर बिगनिंग टाइम नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज नहीं करना है, हमें सिंपल से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करना है. बट अगर बिगनिंग टाइम मेंशन है तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना है. सो इट शुड बी यूज इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. नाउ सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर. आई एम राइटिंग सिंस दिस मॉर्निंग. अब यहाँ पर मॉर्निंग लिखा हुआ है, मीन्स एक टाइम यहाँ पे दिया हुआ है. सो आई हैव बीन राइटिंग सिंस दिस मॉर्निंग. सो यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है, जिसमें हमने हैव का यूज किया है. सो आई हैव बीन राइटिंग सिंस दिस मॉर्निंग. सो एम को हटा के हमने यहाँ पे हैव बीन यूज कर लिया. शी हैज बीन स्लीपिंग नाउ. अब यहाँ पे कोई वैसा वो नहीं है, अभी वो सो रही है, कोई इसका स्टार्टिंग टाइम नहीं दिखा है यहाँ पे. सो शी इज स्लीपिंग नाउ. दिस इज द करेक्ट वन. वी आर लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years. अब इसका बिगिनिंग टाइम दिखा रहा है हमें, सो दिस इज रॉन्ग. सो वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years. हम दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं. सो यहाँ पे इसलिए हमने आर को हटा के हैव बीन लिख दिया है. एंड दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. Now frame suitable questions to get the underlined words in the following sentences as answer. So children, here some examples are given here. But we want the answer question related to that. So अभी हम कर रहे थे question number C. I want to buy a new car. So अब यहाँ पे जो है आंसर आना चाहिए a new car. So question क्या हमने बनाया, what do you want to buy? So जब आप किसी से ही पूछोगे तो वो क्या बोलेगा, a new car. So उसने ये आंसर दिया. So आंसर ये आना चाहिए, ऐसे हमें यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस बनाने. So we can see the next point. I want to buy a new car. अब इसमें I हमारा आंसर आना चाहिए. Who wants to buy a new car? So अब ये क्वेश्चन पूछा हमने कि कौन खरीदना चाहता है, तो आंसर आया I want to buy. Next, question number 2. The boys shouted while the teacher was teaching. So boy जो है shout कर रहे थे जब जो है टीचर टीच कर रही थी. So ये shouted जो है हमारा आंसर आना चाहिए. Okay children, so like this. अब यहाँ पे जो बी पार्ट है इसमें the teacher आंसर आना चाहिए, and was teaching आना चाहिए, and the boys आना चाहिए. So यहाँ पे last क्या है, who was shouting while the teacher was teaching, तो आंसर हो जाएगा the boys. यहाँ पे जो है was teaching, who what the teacher was doing, तो आप आंसर दोगे she was teaching. And इसमें क्या लिखोगे आप, the teacher, who was in the class, or who was there when the boy shouted, the teacher. So like this you have to frame questions here children, as we have done the first one. The rest you have to do on your own.
Now next is confusion over present continuous and present perfect continuous. So क्या confusion है present continuous या फिर present perfect के बीच में? If we want to express the beginning time of an action, we cannot use it in the present continuous. So अगर जो है हम express करना चाहते हैं अपनी बातों को at the beginning of the action के शुरुआत में, we cannot use it in the present continuous. हम उसे present continuous में use नहीं कर सकते. We should use it in the present perfect continuous. So हमें यहाँ पे present perfect continuous को use करना चाहिए. Conversely, if no sense of the beginning time of the action is expressed, it is incorrect to use it in the present perfect continuous. So जैसा कि हमने पता था कि अगर जो है स्टार्टिंग टाइम हमें जो है नहीं पता है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज करना चाहिए, और अगर पता है तो हमें यूज करना चाहिए. So children, as we have done the first one, rest of the questions you have to do on your own. Now let's do simple past or past indefinite tense. So here in the past simple past tense or the past indefinite tense, the rule is subject plus past tense of the verb, that is here we have to use the second form of the verb and then the object. So यहाँ पे जो examples हैं, I went to school yesterday, the students came late, we discussed the matter, we met his father last week. So children, यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे verb use किया है वो second form use किया है और उसके साथ हमने past form को use किया है. So the use of simple past or the past indefinite tense. So क्या है यहाँ पे simple past tense या फिर past indefinite tense में क्या uses हैं? We are going to learn about them. The simple past tense is otherwise called the past indefinite tense. So simple past tense को यहाँ पे हम past indefinite tense कहेंगे and it is used in the following ways. So कौन सी चीजों में हम ये use करते हैं? First one is a completed action of the past. So past के किसी action जो कोई ऐसा action जो complete हो चुका है, so इस case में we use this. So here the first example is given. Seema answered all questions. We slept late yesterday. Seema ने सारे answers दिए and we slept late yesterday. हम कल रात में देर से सोए. He pressed the bell and waited. I woke up early today. So यहाँ पे अब सेकेंड सेंटेंस कह रहा है कि उसने बेल को प्रेस किया था और वेट किया and I woke up early today और मैं जल्दी उठ गई. To form a time clause for a clause in the past perfect tense. So time clause को form करने के लिए भी हम यहाँ पे simple past tense use करते हैं and we are use that in the past perfect tense. For example, when he came, I had left. So here we have used the past perfect tense. Jack had returned before the bell rang. So children, here also we are using the past perfect tense. To form a time clause for a clause in the past continuous tense. So time clause को भी form करने के लिए हम past continuous tense use करते हैं. And the examples are when she left, I was sleeping. So जब वो गई मैं सो रही थी. So here we have used the past form here and here the past continuous tense is used. We were talking to each other when the teacher came. Now simple past negatives. So we are going to learn how can we frame simple past negatives. A negative in a simple past is formed by using did not before the base form of the verb. For example, I came yesterday and इसको negative में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? Did not का use करेंगे. So remember this children, जब भी हम past form में negative बना रहे हैं तो did का use करना है या did not का use करना है, लेकिन जब हम present में बना रहे हैं तो does या do का use करना है. So here यहाँ पे came को हमें पहले convert करना है in the present form. अब यहाँ पे did not लगा दिया हमने. So I did not come yesterday. We applied for the job. अब applied का क्या बन जाएगा? Applied और did not लगा देंगे. So we did not apply for the
job. Next is simple past questions. A question in a simple past is formed by using did before the subject. So subject से पहले हमें did लगाना है और then we are going to make out the questions. So the base form of the verb is used here. She sang a song. अब इसको क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करेंगे? Did लगाएंगे. Did she sing a song? अब यहाँ जो पास्ट फॉर्म है उसे क्या करना है? हमें वापस से प्रेजेंट में हमारे फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. Did she sing a song? Amit talked loudly. Did Amit talk loudly? So these are the ways in which we can convert negative and question marks of the past form. Now, there is some confusion over present perfect and simple past. So present perfect और simple past में जब हम convert करते हैं तो कुछ confusion होता है, and for that we should omit that. Both the present perfect and the simple past express complete action. So दोनों ही जो होते हैं, जो present perfect होता है या फिर हमारा जो simple past होता है, दोनों ही एक complete action को express करते हैं. But if you want to express the time of the action, it is incorrect to use it in the present perfect. So अगर आप चाहते हो कि जो टाइम है एक्शन का वो एक्सप्रेस किया जाए, तो क्या करना हमें इसमें प्रेजेंट परफेक्ट को यूज नहीं करना. इफ टाइम इज मेंशन इट शुड बी इन द सिंपल पास्ट. सो अगर टाइम मेंशन किया गया है तो हमें सिंपल पास्ट में ही सेंटेंस को कन्वर्ट करना है. हाउएवर इन द सिंपल पास्ट द टाइम ऑफ द एक्शन इज नॉट नेसेसरी. सो सिंपल पास्ट में हमें जो टाइम दिया गया है एक्शन का वो जरूरी नहीं है. For example, I have passed BA in 2010. So this is incorrect. And the correct one is I passed BA in 2010. Similarly, I have passed BA. अब यहाँ से हमने into 2010 को हटा दिया है. So this is also correct and this one is also correct. But the upper one is wrong. They have left for Mumbai yesterday. मुंबई के लिए चले गए. दिस इज इनकरेक्ट. सो दे लेफ्ट फॉर मुंबई येस्टरडे और दे हैव लेफ्ट फॉर मुंबई. सो यहाँ से हमने टाइम को हटा दिया है. तो टाइम को हटा दिया तो देन इट इज करेक्ट. वी हैव विजिटेड चेन्नई इन 2011. सो हैव हट जाएगा तो वी विजिटेड चेन्नई इन 2011. और इफ वी वांट हैव हमें लगाना है तो हम इन 2011 को हटा देंगे. तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन? वी हैव विजिटेड चेन्नई. So these are some of the examples, children. You have to keep in mind when we do the exercises. Now rewrite the paragraph in simple past tense. I have a small apartment in Mumbai. I live in a small apartment in Mumbai. So अब आपको इसको क्या करना है? सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है. तो लिव बन जाएगा lived. I lived in a small apartment in Mumbai. I travel by local train to the suburbs every day. अब travel बन जाएगा traveled. I travel by local train to the suburbs every day. So like I have done the correction here, children, you have to do the same. You have to convert all the sentences given here in simple past tense and complete the given exercise. Now the next one is past progressive, that means continuous tense. So past continuous tense क्या है? Let's see. If the subject is I or the third person singular. अगर जो है सब्जेक्ट जो I होता है या जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर हो तो हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के साथ was लगाना है, फिर बेस फॉर्म लगाना है and then we add ing to it. For example, I was reading. अब आप देखो यहाँ पे हमने I के साथ was लगाया है, the बेस फॉर्म और उसमें हमने ing को ऐड कर दिया. It was raining. She was typing a letter and Ramu was writing the mail. Next is if the subject is we. अगर सब्जेक्ट जो है we है, you are और plural. अगर सब्जेक्ट you है या we है या फिर कोई plural है तो हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के साथ word लगाना है, फिर base form and then we add ing to it. So we were having dinner, you were attending a call, the teachers were teaching and the students were learning. So these are some of the examples. Keep in mind. Now let's learn about the use of
past continuous tense. The past continuous tense is otherwise called the past progressive tense. So past continuous tense को हम past progressive tense भी कहते हैं. It is used to tell of an action that was going on in the past. So ये ऐसे action के बारे में बताता है जो past में चल रहा था. It is often accompanied by the simple past to show the point of time. So accompany क्या आता है, मतलब ये simple past के साथ चलता है ताकि ये proper time को show कर सके. For example, it was raining when we sat down. So जब हम बाहर गए बारिश हो रही थी. When the principal came, the students were shouting. जब principal आई तो बच्चे जो है shouting. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे simple past भी use किया है. Here came is a simple past and past continuous is also used. Now let's make sentence in the past continuous tense. तो sentence बनाना हमें past continuous tense में. First one is she dash a book. अब यहाँ पे past continuous use करना है तो अभी नो कि या तो हम यहाँ पे was were लगाएंगे या फिर verb के साथ ing लगाना है. So the basic formula is was were plus verb plus ing. So she dash a book was buying. The teacher dashed the boy was punishing. So children, we have done 2. Rest you have to do on your own. Next is simple future or future indefinite tense. So simple future को future indefinite tense भी कहते हैं. And the forms are if the subject is the first person. अगर subject जो है first person है, for example I या फिर we है, तो subject के साथ हमें shall and then base form and then be का that means verb का first form और फिर object लगाना है. If the subject is the second person, अगर जो subject है वो अगर second person है जैसे कि you है और the third person या फिर third person है तो हमें क्या करना है, subject के साथ will लगाना है and then the base form and then the object. For example, I shall visit him next week. या फिर we shall make the arrangements. Here he लिखा है so will pass the exam with good marks and they will cooperate with you. Children, what we have to remember is in modern English the use of shall is becoming less. अब आजकल जो हम modern English पढ़ रहे हैं इसमें shall को हम कम यूज करते हैं, especially in the formal spoken English. This is because the conversational English, the contracted forms of shall and will are used. So, क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि अब contracted form जो है इनके use होने लगे हैं. In speech, both of these contraction sounds are similar to will. So, speech में ये जो दोनों हैं इनके जो contraction sound है वो same होते हैं. Hence, in speech, will is generally heard. तो आप देखोगे कि ज्यादातर हम will का यूज करते हैं, will हमें ज्यादा सुनाई देता है. Now uses of simple future. The simple future tense is otherwise called the future indefinite tense. The simple future is used for an action that will take place in the future. So simple future tense हम कब यूज करते हैं? जब ये बताना हो कि कोई काम होने वाला है. It is not used to mean a progressive or complete action. So ये किसी कंप्लीट एक्शन के लिए या फिर कोई प्रोग्रेसिव टेंस के लिए यूज नहीं होता है. Here the examples are given. They will return tomorrow and Sumit will leave for Delhi next week. We shall meet him this weekend. The result will be published on 15th July. So जितने भी सेंटेंस हमने यहाँ पे पढ़े सब में आप जब ध्यान से देखोगे so the work will be done. काम होने वाला है. He will return. वो आने वाला है. Tomorrow कल आने वाला है. वीकेंड पे हम जाने वाले हैं. दिल्ली अगले हफ्ते जाने वाले और 15th जुलाई को ये पब्लिश होने वाली है. Now the simple future negative send question. अब simple future में हमें negative sentences कैसे बनाने हैं या questions कैसे बनाने हैं. Let's see. To form negatives in the simple future, not is used after shall and will. So simple future में हमें जो है negative बनाने के लिए not का use करना होता है shall और will के बाद. In the formal English, the contractions shan't and won't are used for shall not and will not.
सो कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है, शैंट एंड वोंट. सो ये यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी शैल नॉट कम टुमारो. सो ये फॉर्मल है. अब दे विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, दिस इज ऑल्सो फॉर्मल. अब शैल नॉट का यहाँ पे हमने शांत कर दिया, वी शांट कम टुमारो and they won't pass the exam. To form questions in the simple future, shall will is used before the subject. So subject से पहले हमें shall या will को use करना है. Here the sentences, we shall give him a laptop. ये statement है. अब इसका क्वेश्चन क्या बना है, shall को हमने कर दिया स्टार्टिंग में subject से पहले. So shall we give him a laptop? So after that we have inserted the question mark. He will pass the exam. Will he pass the exam? What shall we give him? Who will pass the exam? Whom shall we give the laptop? And what shall he pass? So ये कुछ questions बनाए गए हैं according to the given statements. Now let's come to the practice time. Rewrite the paragraph using the simple future tense wherever possible. तो पैराग्राफ को दोबारा लिखना है, सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करना है इसमें. आई ड्राइव टू वर्क एवरी डे. अब ड्राइव का क्या बन जाएगा, विल ड्राइव. सो आई विल ड्राइव टू वर्क एवरी डे. आई टेक अ बैग. आई विल टेक अ बैग, some books and a water bottle to work. So here we have converted everything in simple future tense. Children, the rest of the exercise is your homework you have to do on your own. Next comes the future progressive, that is continuous tense. अभी हमने पढ़ा फ्यूचर टेंस के सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में. अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में. सो इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट के साथ विल शैल तो लगता ही है, बट इसमें अब हम बी को भी ऐड कर देते हैं. बी इज ऑल्सो एडेड हियर. विल बी और शैल बी इज यूज्ड हियर with the verb की first form and ing plus object. For example, we shall be waiting here when you return, and they will be doing the work when the boss comes. It will be raining when we set out, and he will be sleeping when we leave. So in this, all these sentences we have used be with will or shall. The use of future progressive tense, क्या क्या use है इसके, let's see. The future continuous tense is otherwise called the future progressive tense, and the future continuous tense is used to tell of an action that will be going on at the point of time in the future. So ये बताता है ऐसे काम के बारे में जो आगे फ्यूचर में होने वाला है. The time is often indicated by the simple present, not by the simple future. So यहाँ पे जो टाइम है वो इंडिकेट किया जाता है सिंपल प्रेजेंट के साथ, ना कि सिंपल फ्यूचर के साथ. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी डूइंग माई होमवर्क व्हेन यू विल रिटर्न. सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट वन इज आई शैल बी डूइंग माई होमवर्क व्हेन यू रिटर्न. अब यहाँ रिटर्न के साथ हमें विल नहीं लगाना था, सो इसलिए ये ऊपर वाला रॉन्ग है. द सेकेंड वन इज करेक्ट. They will be having lunch when the bell will ring. So will नहीं लगाना हमें. So अब क्या हो जाएगा, they will be having lunch when the bell rings. So this one is correct here. So children, let's come to the practice time. Here we have to make sentence using future continuous tense. So future continuous tense use करना हमें, और आपको पता है कि will shall के साथ हमें be लगाना है. So they dash for a meeting in an hour. So will went, will go and will be going. So will be going is the correct answer. Be dash here till you return. Shall. We shall be waiting. Shall wait. Be waiting. So shall be waiting is the correct answer. Children, you have to write this. And the rest questions are your homework you have to do on your own. Now, let's do more. The following sentences have mistakes in the use of tenses. So कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें कुछ मिस्टेक्स है. रीराइट द सेंटेंस करेक्टली इन द स्पेस प्रोवाइडेड. तो जितने भी अभी हमने टेंस पढ़े हैं वो सारे मिक्स हैं यहाँ पे, तो उन सबको यूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हमें फ्यूचर टेंस यूज करना है. आई एम नॉट लाइकिंग टू रीड डिटेक्टिव नॉवेल्स. आई डोंट लाइक. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट लाइक टू रीड डिटेक्टिव नॉवेल्स. सो यहाँ पे हम लगा देंगे
क्योंकि नॉट का यूज हो रहा है यहाँ पे, तो हम लगा देंगे do not. I do not like to read detective novels. I have met your uncle last year. I met your uncle last year. अब have यहाँ पे नहीं है. So children, like this you have to complete the given exercise. All these questions you have to do on your own. Now read the news items given below and fill in the blanks with the correct tense of the verb in the bracket. So bracket में कुछ verb दिए हैं, इनको use करना है और news को आपको complete करना है. The first one has been done for you, so I am going to explain it, children. Here this is a news report of alert villager adverse disaster. So कुछ disaster हो गया, उसके regarding ये news दी गई है. Jargram, a 32-year-old man who had been living near the railway tracks for past 2 years dashed advert a disaster on Saturday morning. So यहाँ पे help लिखा हुआ है. So you have to like this is done here. Had been living लिखा है. So बाकी जो है आपको जो भी यहाँ पे verbs दिए गए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना है. And then you have to fill the exercise given here. So children, we have completed this chapter and I hope that we have done so many things. You remember everything that I have taught you. If you have any queries related to any of the topics or any of the questions, you can ask me in the comments and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned.